Hello, friends, and good morning once again. So today I have come up with one new subject, and this particular subject, this particular topic is suggested, recommended by one of my dear friend, Miss Nipa Shah from Kolkata, and the topic is judgmental, being judgmental. Before I start this topic, friends, I would like to request everyone once again कि अभी तक अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, काइंडली डू इट. I have been consistently coming up with some very interesting topics suggested by my friends, and it's going to help one and all. It's going to benefit one and all. So kindly do it. Ask your family, relatives, friends, colleagues, anybody. Ask them to watch this. Ask them to put in their likes, comments, feedbacks. Ask them to subscribe. Thank you very much. So today's subject is judgmental. Friends, the last week I had my talk on thinking, to think. Now, when I talk about judgmental, it has got some kind of a root in that talk as well, because it was related to thinking, and being judgmental arises out of certain kind of a thought process. So it's very important that I review that particular talk a little bit so that my foundation for this talk can be established. In that particular talk, I had said that we as human, we have a constant thinking which is going on, and based on our thought processes, based on our thinking, we tend to get into certain mode of a belief system. It's okay, fine, because a thinking human brain with their intellect, with their information, they are of course going to make certain kind of a belief system, and it would be made. So we make that particular belief system. Or in that particular talk also, I had said that there is something known as rigidity which creeps in when we are making our belief system, and we have to be aware, we have to be careful that we don't enter into that particular zone of rigidity जो मैंने वो talk में बोला था. Now from taking it further from there and connecting it with our current topic of judgmental. So friends, when do we tend to get judgmental? हम लोग judgmental कब बनते हैं? तो जब अपनी ये बिलीफ सिस्टम्स बनती है, अपने एक्सपीरियंसेस गैदर होते हैं, अपने नॉलेज गैदर होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि वी ट्राई टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स, वी ट्राई टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ चेक पॉइंट्स. और बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, एंड एवरी इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल इज गोइंग टू ऑफ कोर्स बिल्ड ऑन दिस काइंड ऑफ चेक पॉइंट्स. सो ये चेक पॉइंट्स बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर में. व्हाट हैपन्स इज दैट प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जब ये रेफरेंस पॉइंट्स वॉट एवर वी हैव मेड, हम लोग उसको कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं. वी डोंट कीप एनी रूम फॉर दैट पर्टिकुलर रेफरेंस बेस जो भी बनाया गया है उसको मॉडिफाई किया जाए, उसको इवॉल्व किया जाए, उसके ऊपर में कोई रेक्टिफिकेशन किया जाए. वी मेक इट क्लोज. व्हेन वी मेक इट क्लोज देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ रिजिडिटी, व्हाट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो उसके अंदर में घुस जाती है. तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट हैपेंस इज वी ट्राई टू क्वेश्चन एनीबडी जो अपने सामने है, वो पर्सन हो, वो सिस्टम हो, वो सिचुएशन हो. वी ट्राई टू frantically question everything what comes from the opposite side. So this happens. और second हो जाता है कि we try to compare what that person is doing with something else. वो हम लोग जिसके साथ में compare करते हैं वो हमारी already वो जो closed enclosed चेक पॉइंट्स हो गए, उसके साथ में वो बिलीफ सिस्टम के साथ में हम लोग उसको कंपेयर करते हैं. सो वी स्टार्ट डूइंग दैट. सो एट दिस टाइम जब ये दोनों चीज़ होती है तो एक टेंडेंसी अंदर से अर्ज डेवलप होती है कि वी कम आउट विथ अवर ओन ओपिनियन, या हमारे कोई कंक्लूसिव रिमार्क दे देते हैं. और वो जो कंक्लूसिव रिमार्क है, वो जो टेंडेंसी है जिससे आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हो उस टाइम पे, उसको कहते हैं कि नाउ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू बी जजमेंटल अबाउट समबडी. बिकॉज इट इज नॉट बैड टू गिव योर ओपिनियंस, मगर हर ओपिनियन के उसका जो उसके नीचे का जो काम होता है वो काम करे बिना कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी ऑफ थॉट प्रोसेस से अगर हम लोग कुछ कंक्लूसिव रिमार्क दे देते हैं, तभी उसको बोला जाता है कि अ पर्सन इज बीइंग जजमेंटल. Now what happens, what kind of a negative impact this kind of a tendency is on us?
आई हैव डिवाइडेड 3 मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो उसके अंदर में आ जाते हैं. पहली बात है कि हमारी जो टॉलरेंस लेवल है, वी टेंड टू गेट लेस टॉलरेंट टूवर्ड्स द अदर पर्सन और सिचुएशन. हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं कुछ ना कुछ. वी कीप ट्राइंग टू थिंक कि भाई कैसे इसको या तो अपोज किया जाए, या इसको कैसे तोड़ा जाए, या उसको कैसे काउंटर किया जाए. वो टॉलरेंस लिमिट जो है वो अपनी कम हो जाती है. सेकंड क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि सामने वाले का जो व्यू पॉइंट है, सामने वाला जो पर्सपेक्टिव है, वो भी हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं. वी कैनॉट गेट इन टू दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट पर्सपेक्टिव. और तीसरा अपनी टेंडेंसी हो जाती है कि वी ट्राई टू अवॉइड टू गेट टू द सोर्स एंड द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर aspect of any talks which is coming or any kind of an action which is coming towards us. We avoid that. We don't get into the source and the root of that. So ये तीन जो negative tendency होती है, wherein we try to defend our belief system in any ways possible. We try to defend it somehow. हो सकता है consciously हो, sometimes हो सकता है unconsciously हो, but we tend to do it. अभी friends, what happens because of this? When this happens, we tend to cross one more line in our social atmosphere. और ये जो line जिसको बोलते हैं that we become judgmental, we enter into a territory of a particular person which is restrictive, private territory. वहाँ पे हम लोग घुस जाते हैं. We enter into that, and not only us. The problem is we influence so many others with us, and we pull them also into that territory, and making it so difficult, so uneasy for that person or the situation. So this is crossing of a line which needs to be checked. और ये कारण से ये होता है कि अपना जो पर्सनल ग्रोथ है, अपना जो इवॉल्वमेंट है, वो भी हैम्पर होता है. वी रेस्ट्रिक्टेड समहाउ, एंड वी नीड टू, वो एक रिवील होता है कि हमारा जो फाउंडेशन जो बिलीफ सिस्टम का है, वॉट एवर वी हैव मेड थ्रू आवर इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, दैट इज ऑल्सो वीक समवेयर. एंड वॉट इट रिजल्ट्स अल्टीमेटली इन द एम्बेरसमेंट एंड लाइफ टाइम रिग्रेट्स many a times. So this is what happens. Now if this is such a critical issue of our human behavior, how to rectify it, how to minimize it, how to counteract it. So this is very important. I divide this solution here with, I am giving you some good nice practices, very very simple, मगर उसको 5 भागों में डिवाइड किया है. 5 छोटे छोटे अवेयरफुल प्रोसेसेस है. If we get into that, I think we can completely come out of this tendency of being judgmental about anybody. Number 1 out of the 5 is that we all must understand and accept that every individual on this planet, every human being on this earth, they have right, complete right to think, to express, to talk, for speech and for action. हर लोगों की अपनी ये डेमोक्रेटिक राइट है, और ये हम लोगों को समझना भी है, एक्सेप्ट भी करना है, एंड उनके जो थॉट प्रोसेसेस से जो एक्शंस आ रहे हैं वो भी उनको अलाउ करना है, और उनको देखना है, उनको समझना है, टिल एज लॉन्ग एज दोज एक्शंस आर नॉट डिस्टर्बिंग द ओवरऑल हार्मोनी ऑफ आवर इकोसिस्टम, द वर्ल्ड, द नेचर, तब तक सबके पास राइट है. वो अगर एक एक्सेप्टेंस जो है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आनी बहुत ज़रूरी है. एंड फिर सेकेंड पॉइंट इज वी नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर. when an opposite person is trying to talk something, trying to express their opinions and ideas, और एक सिचुएशन जो है वो आपके साथ में कुछ तरह से रिएक्ट कर रही है, we need to be very very nice listener and very keen observer. इंटेंट लिसनिंग चाहिए, ऑनेस्ट लिसनिंग चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल नॉट ओनली हेल्प अस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ आवर ह्यूमन बिहेवियर, जहाँ पे हम लोग जजमेंटल को, अपनी जो टेंडेंसी को मिनिमाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, मगर लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे अपनी जो लाइफ सिस्टम है, पॉसिबिलिटी है,
उनमें भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है. सो दैट इज नंबर 2, बी अ गुड लिसनर. Third point comes, never assume anything. I repeat, friends, never assume anything. अगर कुछ भी डाउट हो, if you have any kind of query, any kind of clarification which is required, don't assume it. Keep asking questions till as long as you don't have the clarity and the satisfaction towards your clarity. So assumption में नहीं जाना है. फोर्थ, जब आपको लगता है कि आपने सही तरह से एक्सेप्ट किया है सामने वाले की बात को, उसको लिसन किया है केयरफुली, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सिचुएशन को ऑब्जर्व किया है, यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू अजम्पशंस, और आपने कुछ लेवल की क्लैरिटी भी हासिल की है, एंड देन व्हेन यू थिंक दैट नाउ इट्स अ टाइम दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, योर ओन एक्सप्रेशन अभी आपका आने का है, या जो एक कंक्लूसिव रिमार्क आप जो देने वाले हो, तो एक बार, जो ये मैं नंबर 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक बार अपने आप को पुट योर सेल्फ इन टू अदर पर्सन शूज, या वो उसकी सिचुएशन, कहाँ से उसकी ये आइडिया इमर्ज हुई है, कहाँ से उसका ये ओपिनियन इमर्ज हुआ है, एक बार बहुत थोड़े समय के लिए ही सही, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट पर्सन शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव बिफोर जंपिंग इन टू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन्स. And finally, when you feel that you are absolutely ready for putting in your judgment about a person or the situation or the system, then put all the links together, put all the loops together, get your algorithms right. And after that, you come out with your conclusions, your opinions, your ideas, and counteract if you need to about any person, any situation or any system. So friends, ये 5 प्रैक्टिसेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो फाउंडेशन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी एक डिसिप्लिन, उसकी एक ऑनेस्टी डिफाइन करती है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, when you are putting in that particular expression of your opinion, आपका एक जो conclusion आ रहा है, आपका एक जो judgment आ रहा है, may it be on a personal level, may it be in a group or may it be in a public domain, एक चीज हमेशा ख्याल रखिए कि put it always as a piece of processed information based on your idea, your intellect and your kind of a perception. Put it as a processed information, वो तरह से आपको रखना है. And very, very important, when you are putting in your final conclusion, I would rather say, take complete responsibility and accountability of that particular expression of speech, that particular judgment. Be fully responsible, be fully accountable. उसको ऐसे ही एक weak flow दे के नहीं छोड़ना है. When you are putting it, put it with all the algorithms right, put it with all kinds of perspectives, because now you have gone through the entire piece of like the things which needs to be done before coming to a judgment. You have passed through all the steps, and so it's going to give you much more conviction, not only to you but for the people who are listening to you. So that becomes very, very important. Be completely responsible about that. And friends, please do not put any extra additional spice or tadka into that particular talk or the judgment you are giving, because it takes the form of a rumor. एक बार आपने कुछ उसमें डालने की ट्राई की, there are other people who are ready to jump on it and try to put in their kind of tadka into it. Don't make it a rumor, don't make it viral, because it's going to make things difficult for everyone in the system, not only for you but for the person जिसके लिए बात हो रही है, जो situation के बारे में बात हो रही है, जो system के बारे में बात हो रही है. It's going to disturb the harmony of everybody. Friends, it's very important. Let's be responsible. Being judgmental एक हद तक ठीक है, और जब आप करना ही चाहते हो, if you need to be judgmental, pass through the entire set of steps which needs to be done as I explain 1, 2, 3, 4, 5. You would be much more respected when you come out with your part of evidences and conclusions and decisions. So thank you, friends. It was wonderful. Thank you, Nipa, once again for giving me an opportunity to talk on this, to research on this. And I hope that I have been able to fulfill. If you had any doubt, I have been able to clarify that. And as I always say, friends, let's learn together. Let's improve together.
Good day and enjoy your week ahead.